Okay. ये सब ऑन कर ना, रिकॉर्डर ऑन कर दिया। ठीक। Yeah, good morning to one and all. Good Prabhat. I welcome you all to this fourth lecture of the series of 10 total lectures we are having. The fourth lecture. The fourth lecture we have with us eminent scientist Mrs. Anju Bajpai, student scientist at RRSC Center, ISRO Center, Nagpur. Before giving a brief introduction about his work and specialization, I will request our own Dean RRSC Chaudhary Madam to welcome Bajpai Madam with a floral bouquet and the bust of Sri Vishweswaraya. Okay. So about Madam, I would like to just give a brief introduction. She has done her masters in MTech, masters in software system from BITS Pilani, and right now he is working as a scientist in RRSC. Her area of specialization is software application development for remote sensing, GIS, and Vidyut 1.0 using the Bhuvan platform. Now, what is Bhuvan platform? That Madam will be telling us in detail, right? This is used for image processing, for radiometric corrections of IRS data, machine learning, deep learning. That is what we need to understand what is deep learning, right? Deep learning applications for future satellite images transformation, IoT applications for air pollution sensing. A talk, she will be delivering a talk over a very overview of a Bhuvan ISRO Earth Observatory Geo folder. Now we all are aware about what is Geo map. That is Google Map, right? So this Bhuvan is India's own. That Google, we know that it is not our own, right? But we are using a lot. But these scientists are developing our own app like Bhuvan App, and about in a talk she will be going in detail of what is Bhuvan App and what this scientist from the Nagpur Center is contributing to the overall project of this Bhuvan App. Madam, heartily welcome to this forum. Thank you. Thank you. सबसे पहले सभी को मेरा गुड आफ्टरनून, नमस्ते। और मैं मेरा नाम है अंजू बाजपेयी। जैसे कि सर ने बताया, मैं रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में काम करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ भुवन। तो भुवन जो है इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन जियो पोर्टल है। इसके बारे में आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा भी करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब अवेयर हों कि क्या है भुवन। आप सबको गूगल अर्थ के बारे में पता है, फिर भुवन के बारे में कुछ कम लोग ही जानते हैं। हेलो, इज इट ओके नाउ? हाँ, अभी ठीक है सर। वो थोड़ा नीचे जा रहा है तो प्रॉब्लम आ रहा है शायद। कहाँ पे तय करते हैं? अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। थोड़ा साउंड कम आ रहा है क्या? ओके, तो ओवरव्यू ऑफ भुवन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या है भुवन, क्या है और उसमें कैसे सैटेलाइट डेटा को जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो भुवन एक्चुअली इंडिया का अर्थ ऑब्जर्वेशन जियो पोर्टल है। तो जियो पोर्टल इज अ गेटवे एक्चुअली टू many applications. So there are Bhuvan is supporting 24 ministries with 200 plus applications and 75 plus Android applications. So there are so many applications which are built in Bhuvan.
The URL you can see it is bhuvan.nrsc.gov.in और you can just search in Google. आप Google पे सर्च कर सकते हैं भुवन के बारे में और उसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जो कि bhuvan.nrsc.gov.in है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 75 प्लस मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक मिलेंगे, 200 प्लस एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस जो कि हमने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के लिए बनाए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए हम बनाते हैं, वो सब मिलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारा सैटेलाइट डेटा मिलेगा और उसके डिराइव प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो सैटेलाइट डेटा में आपके पास में लिस्ट 3 है, लिस्ट 4 है, एविप्स है, कार्टोसैट 1 है और हाई रेजोल्यूशन डेटा है। ये भी टाइम सीरीज में है, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन डेटा जो लेस देन 1 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर एरिया जो है अर्थ का, वो 1 पिक्सल पे आता है। तो वेरी फाइन रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन डेटा इज देयर फ्रॉम 2012, 2017 एंड 2018। तो इस तरीके का डेटा है और फ्यूचर में जैसे जैसे और डेटा आता है वैसे वैसे वो डेटा जो है पब्लिश होता जाता है और वो भुवन का पार्ट ऑटोमेटिकली आपको मतलब दिखाई देता है, वो बन जाता है। तो इसमें अभी तक जो है 100 मिलियन प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेटा कलेक्ट किया गया है, फील्ड डेटा कलेक्शन एप्लीकेशंस जो मोबाइल के होती हैं उसके जरिए। तो हम इसकी जर्नी के बारे में जब बात करते हैं तो भुवन की जर्नी क्या है, क्या है भुवन, कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था 12 अगस्त 2009 को, इसका बीटा वर्जन फर्स्ट रिलीज हुआ था। और इसमें जो है सिर्फ 3D विजुअलाइजेशन था। आपने नीचे हमारे स्टॉल्स में जो है 3D वगैरह देखा होगा। तो एक वेब पेज है जिसमें आपको पूरा का पूरा जो है अर्थ का टेरेन जो है 3D में दिखाई देता है। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट जब शुरू हुई 2009 में, तो इसमें सिर्फ यही पेज था। बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, जो सेकेंड रिलीज आई जो 2010 में आई, उसमें 2D भी था और ये प्लगइन की जरूरत जो थी वो हट गई थी, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी आपको। और फिर धीरे धीरे एडवांस होते गए। तो अब जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारा टाइप का डेटा है, 200 प्लस एप्लीकेशंस हैं। अब 2D के अलावा 2.5D भी है, 3D भी है। और बहुत सारे ओपन सोर्स सॉल्यूशंस यूज हुए हैं ताकि वो फ्री हो, लोगों को कोई लाइसेंस या कॉस्ट ना लगे, कोई प्लगइन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारा फ्री डेटा है अभी अवेलेबल डाउनलोड के लिए। आप अपने रिसर्च के लिए आप जब और आगे आप रिसर्च वगैरह में जाएंगे तो आप उस डेटा को डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वो नोएडा करके एक एप्लीकेशन उसमें अवेलेबल है। और थीमेटिक सर्विसेज हैं, जैसे आप कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स या एप्लीकेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसकी थीमेटिक सर्विसेज, थीमेटिक डेटा की सर्विसेज हैं, वो डायरेक्टली आप कंज्यूम करते हैं किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर जैसे कि क्वांटम जीआईएस और बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप डायरेक्टली उस डेटा को कंज्यूम कर सकते हैं। सो कैपेबिलिटीज या टूल्स के बारे में बात करें तो विजुअलाइजेशन जैसे मैंने बताया 2D, 2.5D, 3D। इसके अलावा आपने पैनोरामिक व्यू देखा है आपने कभी, है ना? आप हाँ हाँ, तो पूरे का पूरा आप पैनोरामा में आप देख सकते हैं, 360 डिग्री में आप देख सकते हैं। 3D मॉडल्स भी हैं इसमें जो इंटीग्रेट किए गए हैं 3D विजुअलाइजेशन के अंदर। तो आप बहुत सारी बिल्डिंग्स के 3D मॉडल्स को उसमें डाल सकते हैं। तो सिटी प्लानिंग के लिए, इवन बिल्डिंग प्लानिंग के लिए कर सकते हैं इसका यूज। इसके अलावा डेटा क्लियरिंग हाउस, जैसे आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, सर्विसेज हैं, एसेट मैपिंग है, इन्वेंट्री क्रिएशन, जैसे कि मैंने बताया 100 मिलियन प्लस डेटा अपलोड किया गया है इसमें। इसके अलावा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में यूज होता है, मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होता है इस तरह की एप्लीकेशंस। डिसीजन मेकिंग में जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पीपल जो है वो कुछ भी डिसाइड करना चाहते हैं तो वो जीआईएस मैप्स का यूज करते हैं। तो बहुत सारी लेयर्स और सैटेलाइट डेटा के थ्रू दे कैन सी ऑन द डेस्कटॉप that how it looks, what kind of decisions we can take on the ground. So ground survey के पहले there is a kind of pre survey you can say support to them कि आप किस तरीके से फील्ड में क्या है एक्चुअली वो आपको दिखाई देता है। उसके अलावा हम लोग के पास रिपोर्टिंग टूल्स हम जनरेट करते हैं और रिसोर्स मैनेजमेंट और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में भी इसका अच्छा खासा यूज हो रहा है। ये जो आपको अभी पिक्चर दिखाई है ये 2.5D है। 2.5D में क्या होता है, हम एक एरिया जैसे कि बनाते हैं, बिल्डिंग का रूफटॉप बनाते हैं, उसको एक्सट्रूड कर दिया जाता है। एक्सट्रूड करने में वो परफेक्ट 3D मॉडल तो नहीं है, बट फॉर सिटी प्लानिंग इट्स वेरी यूजफुल, ओके, बिकॉज यू हैव द एक्चुअल फुटप्रिंट एक्सट्रूडेड विद द हाइट। सो यू कैन प्लान कि अभी 3D में एक्चुअली कहाँ पे कितना हमें विजुअल मतलब कितना एरिया हमें मिलेगा, किस तरीके के आसपास की सराउंडिंग्स है, वो सारी प्लानिंग आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज वेरी डिटेल 3D मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग।
तो ये भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज दिस इज द डेटा डाउनलोड। सो यहाँ पे आप क्या है, बहुत सारा डेटा जो है फ्रीली अवेलेबल है आपको, वो सभी कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज द क्राउड सोर्स डेटा। सो बहुत सारा डेटा जो फील्ड डेटा से कलेक्ट किया गया है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ये कि ये किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए या अंडरस्टैंडिंग द फील्ड के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। जीपीएस वगैरह उसमें इंटीग्रेटेड रहता है। Next is this doing a geo processing. So suppose already you are having some features, you can take a buffer, you can intersect, you can do a union. So you can create new maps, dynamic maps, okay, using geo processing. So ये भी उसी का एक example है कि आपने कैसे geo processing कर रहे हैं। फिर जैसे कि डिजीज सर्वेलेंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस का। सपोज आप फील्ड में जा रहे हैं, आपने फोटोग्राफ लिया कि दिस पर्टिकुलर क्रॉप इज हैविंग दिस डिजीज, उसका फोटो डाला, उसका डिजीज के बारे में डिटेल्स दिया, तो देन ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन में कैसी डिजीज हो रही है, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, आप वो मॉनिटर कर सकते हैं। देन दिस इज वेरी हाई स्केल डेटा, जिसमें कि आपको पूरा कैडेस्ट्रल लेवल का डेटा जो है, रोड्स, settlements, lakes, ponds, everything is visible. Okay. So this is generated using high resolution satellite data as a base map. Also, we have a tracking applications where vehicles can track each other. So suppose a vehicle is moving from one place to another, they can track the position of the vehicle, which is going to a particular location. So a tracking application is also there. Then capabilities and tools में citizen centric tools यदि हम बात करें तो routing is also available. So भुवन लाइट करके एक एप्लीकेशन है, उसमें आपको राउटिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस एंड मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट, व्हीकल ट्रैकिंग, डीएसएस, रिपोर्ट्स, एसएमएस, ये सारी फैसिलिटीज आप इसमें इम्बाइब्ड है। तो भुवन जो है, आप यदि आप गूगल मैप को देखते हैं, वो सिर्फ एक विजुअलाइजेशन टूल नहीं है, वो दरअसल एक प्लेटफॉर्म है यूजर एप्लीकेशंस बनाने के लिए। नई यूजर जैसे कि मिनिस्ट्रीज या कोई भी हमारे पास आते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स आते हैं, अलग अलग रिक्वेस्ट रहती है, एग्रीकल्चर के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में वो जानना चाहते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जीआईएस की, तो वो हम इसके जरिए दे सकते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। उसके अलावा ये प्लेटफॉर्म है फॉर मेकिंग मोबाइल एप्लीकेशंस आल्सो यूजफुल। सो यू हैव लॉट्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस हियर। Fourth important thing is it's a platform for free data clearing house. Means you can download a lot of Earth observation or satellite data freely. It's not only visualization, but also it's a platform for states to share their data. So various states and departments are there, they can share the data online. Okay. Next is this is also an application for states, ministries and departments. It's also an application of disaster support. So we also support the disasters like cyclones, floods, drought. So many different types of disasters are actually covered. It's also a platform for mapping. So there is a application called Bhuvan Mapper, in which you can create your own map. Okay, so and you can download everything. So coming to the data, we started with very simple base layers in 2009. And then we moved up to 1 meter high resolution data, which is now available for 425 plus cities, and 7.5 lakh square kilometer data is available. And already 100 million and 10 million, 100 million point of interest are available. So this is the cadastral boundary. So you can see the same thing, how it looks in the satellite data. Okay, when you overlay both of them, you can understand that how it is demarcated. So that much high resolution is now available. Okay. Talking about various objects which are visible, you can see here, this is a cursor is visible there? No. Okay, so this is a mountain actually, and these are windmills actually. Can you see that? So this much details you are able to view. You can also see the shadow. Okay, so you can understand some of the features which are hidden by the shadows also.
These are the basically the plantations, or you can say these are the tree plantations. So like suppose there is orange plantation is there. So all those things you can see here, or horticulture plantations are there, crops are there. You can identify that this is a tree and this is a different type of cropland. Okay. And this is an industrial area. You can identify very clearly with the kind of infrastructure they have. Also, in this Bhuvan 3D, we have integration of 3D models. So you can you generally develop Google SketchUp, you know. Are you aware of somebody is using? Okay. Some people, maybe students, or since I'm seeing some school students also, some Minecraft kind of games are available. Yeah, people are using. Good. So you can also go for like SketchUp tools, okay, and create your own 3D models. Okay. Those also can be integrated. You write to Bhuvan, you create a register in Bhuvan. There is a registration is available. So if you have a mail ID, you can register with your credentials. Okay. When you become a Bhuvan user, you can write to them, give your 3D models if you have generated something in a particular format, they will ask you, and it can be integrated. So a lot of 3D data generated by students are also integrated from Nagpur also in this portal. Talking about the hydrological base, starting from basins to watersheds to sub-watersheds and micro-watershed level, and even the drainage network. This is the part of their the maps, which are base maps, which is available. So hydrology में भी बहुत सारा data जो है हमारे पास हम इसमें provide कर रहे हैं as a base map. So you can do a lot of hydrological analysis. This is another image which is showing these are the croplands actually. This green color, and you can also see some sparse trees. Small trees are there. You can see, yes, very small. Inside and outside the cropland. So sometimes due to agroforestry kind of cultivation also this happens, and sometimes as a shade tree also it is used. And then this is a three-dimensional view. Okay, so in 3D you can see like here. This is the mountainous region, and this is a flatter region having covered with all the crops. These are the croplands. How you identify croplands, you may ask, right? So a cropland you can identify by the boundary, management boundaries. Generally, any cropland will have some management boundaries, management roads, and the vegetation will be demarcated with that. Means it will have some kind of management boundaries like square kind of structure or rectangle you will see there. So that's how we correlate the field knowledge with the satellite data to generate a kind of classification or to generate different types of layers, cropland layers. Okay. So that way it is interpreted. This is another 3D visualization. This is 2D. And this is again we also have different types of data which is generated from the satellites. Like this is one data which is the salt affected areas. So what are the kind of siltation or what kind of effect is there, whether the soil is saline or it is silt is there, or some other type of slight or moderate kind of salt affected region is there. That kind of classification is done using the field data as well as the field data which is interpreted in the satellite imagery. Using both the kind of things, data integration, we generate these kind of thematic maps. So you can analyze various themes. As per various themes, you can analyze what kind of earth surface is available in your particular location or area of interest. तो उस तरीके से हमको लैंड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. यही नहीं कि सिर्फ उसमें रोड कहाँ है या उसमें घर हमारा कहाँ है, बल्कि इसके बारे में ये पता चलता है कि वो किस टाइप के एरिया से सराउंडेड है. मतलब हमारे आसपास में कैसा एनवायरनमेंट है, आसपास में क्रॉपलैंड्स हैं क्या, या हमारे एरिया वाटर लॉक्ड है क्या कहीं पे, या हमारे यहाँ पे जो सॉइल है वो कितनी फर्टाइल है, या कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, सॉल्ट इफेक्टेड है क्या वो. तो इस तरह की बहुत सारी आपको जो है इसके बारे में जानकारियां मिलती हैं एडिशनल. तो ये भुवन आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में. देयर इज नो चार्ज फॉर दिस. ओके, देयर इज नो लाइसेंस फॉर दिस. यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनीथिंग. Just go on a browser
and type this URL bhuvan.nrsc.gov.in and you enter it to Bhuvan, and it is all yours. Just register into this. Okay, create your registration today itself. I should see at least how many people are there today. Around 100 maybe. Yeah, and more, also those who are online, please register in Bhuvan, because it is our own India's, our own geo portal. So I am not asking you to stop using anything, Google Earth or anything, but you should definitely use data which is taken by your own country for your own benefit. Okay. Next is like thematic. So now this, what I am showing is, this is a land use. So earlier was a salt affected land use. May you have various classes. So you can overlay on top of the satellite imagery and you can find out that, okay, my land is now, my house is there. So house may be generally coming under settlements. If I am having an agricultural land, it will come under crop land. Okay. So this kind of data is already available. Then next is diverse land use. As we all know, India is rich of natural resources. हमारे यहाँ पे हिमालय से लेके जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस है, माउंटेन्स है, बहुत हाई पीक्स है, वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक बहुत ज़्यादा वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड यूज एंड लैंड फॉर्म्स हैं. सो ये एक यूनिक चीज़ है इंडिया में जो आप स्टडी कर सकते हैं. तो इसके ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की स्टडीज पॉसिबल है, इसलिए इसी वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से, क्योंकि हर जगह जो है एक सिस्टम अलग ही है. इकोसिस्टम इज स्लाइटली डिफरेंट. इफ यू गो टू द नॉर्थ, इफ यू गो टू द साउथ, इफ यू गो टू द ईस्ट, इफ यू गो टू द वेस्ट एंड इफ यू गो टू द सेंट्रल पार्ट, तो हर जगह आपको अलग अलग लैंड फॉर्म्स, अलग अलग चीजें दिखती हैं यहाँ पे. एंड इवन एग्रीकल्चर जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, आपको पता ही होगा, माउंटेनियस रीजन्स में अलग टाइप से प्रैक्टिस किया जाता है, कोस्टल रीजन्स में कुछ अलग टाइप के क्रॉप्स मिलते हैं. तो उस तरीके से यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है. देन अब हम बात करेंगे वेब मैप सर्विसेज की. तो अभी हमने देखा कि सैटेलाइट डेटा हमको क्या विजिबल है, अवेलेबल है. इसके अलावा जो हमारे पास थीमेटिक डेटा है, वो सब कुछ एज ए मैप सर्विस हमें अवेलेबल है. तो मैप सर्विस मतलब क्या है, आप पहले पूछेंगे. मैप सर्विसेज का मतलब है कि जो एक ऐसी सर्विस जो आपको मैप्स प्रोवाइड करती है. तो आप इसका क्या कर सकते हैं, आप कैसे यूज कर सकते हैं. एक तो भुवन में आप इसको देख सकते हैं. भुवन में हर चीज मैप सर्विस के जरिए दिखाई जाती है. कोई भी चीज ऐसे हार्ड कॉपी नहीं है, या कोई भी चीज ऐसे आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा. सब कुछ आपको एज ए सर्विस, आप जहां क्लिक करोगे जूम होगा, यहाँ क्लिक करोगे वहां यहाँ पे इंटरेक्ट करोगे, यहाँ पे ड्रॉ करोगे. ओके, सो एवरीथिंग इज ऑन द वेब एज ए सर्विस, वेब सर्विस. तो ये जो अलग अलग तरह की वेब मैप सर्विस भुवन प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं. मतलब जैसे सपोज आपको एक क्वांटम जीआईएस करके एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, जीआईएस मतलब. तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं. मतलब आप अपना सैटेलाइट डेटा ऐड कर सकते हैं, अपना मैप क्रिएट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं. तो वहां पे आप ये सारे थीमेटिक डेटा सेट्स को एज ए सर्विस आप उसमें डाल सकते हैं. आपको फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. उस सर्विस यूआरएल को यदि आप उसमें डाल देंगे तो वो मैप आने लगेगा. तो बैकग्राउंड में आप ये सारी की सारी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं. ये फायदा होता है वेब मैप सर्विसेज यूज करने का. तो ये वेब मैप सर्विसेज एक्चुअली जो है, ये एक स्टैंडर्ड है. ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम और ओजीसी जो है, एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. उसने डिफाइन किया है वेब मैप सर्विसेज को कि दुनिया में जहां पे भी यदि मैप्स बनाए जाए वेब पे, तो वो इसी स्टैंडर्ड में होने चाहिए. तो इस स्टैंडर्ड में आप जब भी डेटा को बनाएंगे, वो इंटरऑपरेबल होगा. मतलब वो कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर में आप यूज कर सकते हैं. आप खुद अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस यूआरएल को यूज कर सकते हैं. So those URLs also we are giving in the Bhuvan. So what are these? Like land use, land cover 50K. तो 50K का डेटा जो है 5 से 10 साल के एक साइकिल में एक अपडेट आता है. तो every data is there, time series data is there. Then 10K is also there. Okay. Then urban land use is also part of this thematic service. Land degradation is there. Water wasteland is there. Water logging is there. Glacial lakes are there. Geomorphology is there. Lineament is also a part. Flood hazard map is there. Flood annual layers are there. Means in 1 year, how many areas, what was the flood inundation?
मतलब कहाँ कहाँ पे फ्लड कितना एक्सटेंट में फैला है, उसकी एनुअल लेयर, साल भर की लेयर्स को इंटीग्रेट करके बनाया। फिर वाटर बॉडीज तो सभी को पता है, तो पानी जल स्रोत कहाँ कहाँ पे कैसे हैं उसके बारे में। अर्बन स्प्रॉल, ये क्या होता है? अर्बन स्प्रॉल मतलब मैं आपको स्लाइड में आगे दिखाती हूँ क्या होता है। तो कैसे एक्चुअली टाइम के साथ साथ जो है हमारा जो सेटलमेंट एरिया है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेफिनेटली लोगों को घर चाहिए, वो घर बनाते हैं, आउटर रीजन में भी बनाते हैं। तो हमारा जो सेटलमेंट एरिया है वो धीरे धीरे करके कैसे बढ़ता जा रहा है, नो। And especially in the cities like Nagpur or metro cities like Mumbai, तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। तो कैसे वहां का लैंड यूज बदला है, तो वो अर्बन स्प्रॉल से दिखाया जाता है टाइम सीरीज डेटा में। फिर ये आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान में कैसे ग्राउंड वाटर के लिए भी आप वेल्स निकालने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा डिटेल्ड डेटा है। एनीवे दिस इज मोर ऑफ जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जिन लोग जो है वेल्स बनाना चाहते हैं ग्राउंड वाटर के लिए, तो उसके लिए उसमें रेंज मिलता है कि इतने से इतने डेप्थ पे इतना वाटर मिल सकता है आपको। तो प्रोस्पेक्ट या पोटेंशियल मैप है एक तरीके से। ये नेशनल राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के तहत इसको बनाया गया था, इस मैप को। इसका बहुत ज्यादा यूज किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोएडा, जो कि एनआरएससी ओपन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा आर्काइव है। तो इस आर्काइव में आपको 24 मीटर्स से अबव डेटा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी डेटा जो है थोड़ा सा कॉस्ट है उसके उसको लेने के लिए, बट ये सारा डेटा जो है वो पूरा फ्री है। एंड डेटा whatever is available is 2-year-old data because it has to be processed, it has to be corrected radiometrically, geometrically, okay. And when the entire India is covered in all the orbits, using all the orbits, then only that data is hosted. So once the entire India is covered, then one data set is hosted on Bhuvan. So there is a cycle, complete cycle of acquisition. So जो सैटेलाइट डेटा एकत्रित करता है, ठीक है ना, अब एकत्रित करके क्या है, वो ग्राउंड पे भेजता है उस डेटा को, राइट। जब ग्राउंड पे भेजता है तो ग्राउंड सेगमेंट एंटीना रिसीव करता है उसको, उसके बाद उसको बहुत सारे प्रोसेसेस करता है। फिर उसको प्रोसेस मतलब उसका करेक्शंस करता है, रेडियोमेट्रिक ज्योमेट्रिक करेक्शन करता है, उसमें रेफरेंसिंग डालता है, मतलब लैट लॉन्ग वैल्यूज आती है उसके बाद जो है उसको मोजेक किया जाता है, मतलब पूरे इंडिया का एक इमेज बनाना आप। जबकि आपके पास जो है एक टाइम पे सिर्फ नागपुर का इमेज आया सपोज, तो वो स्टिचिंग जो कहते हैं ना, स्टिचिंग काइंड ऑफ थिंग, दैट इज मोजेक। तो जब ऐसा फुल इंडिया मोजेक बन जाता है तभी उस डेटा को डाला जाता है। इसलिए 2 years ओल्ड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें से आप बहुत सारा डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग थीम्स में डेटा अवेलेबल है। जैसे एक तो हो गया सैटेलाइट प्रोडक्ट्स, दूसरा हो गया टेरेस्ट्रियल साइंस प्रोडक्ट्स, देन ओशियन साइंस प्रोडक्ट्स, फिर एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेटिक साइंस प्रोडक्ट्स, फिर क्रायोस्फेरिक प्रोडक्ट्स, ओके। सो इतने टाइप के प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। फिर हम यही अभी हमने जो बताया था थीमेटिक सर्विसेज, तो दीज आर ऑल द थीमेटिक सर्विसेज व्हिच आर अवेलेबल, लैंड यूज, लैंड कवर वगैरह जो बताया था। डिजास्टर में जो है आपके पास में हम बहुत सारा डिजास्टर्स को कवर करते हैं। जैसे अभी साइक्लोन्स बहुत सारे आए हैं कुछ पिछले 1-2 सालों में, 2-3 साल में, वो सारे साइक्लोन्स की इंफॉर्मेशन, प्री साइक्लोन, पोस्ट साइक्लोन, क्या इमेज था, ओके, हाउ मच इनंडेशन एंड डैमेज हैज हैपेंड, ऑल दो स्टडीज, ओके, व्हाटएवर वी आर डूइंग थ्रू द सैटेलाइट डेटा। और डैमेज में तो क्या होता है, डिजास्टर्स में इवन बाहर का डेटा भी आप एक्वायर कर सकते हैं, करते हैं जनरली, क्योंकि जरूरी नहीं उसी वक्त आपका पास हो, वहीं पे ऑर्बिट का पास हो और आपने वहां का डेटा दिया हो। तो जहां का भी डेटा अवेलेबल है लेके हमें बस डालना होता है, स्टडी करना होता है इमीडिएट। तो उस तरीके का डेटा है, फ्लड से रिलेटेड डेटा है, साइक्लोन से रिलेटेड डेटा है, फिर लैंडस्लाइड जो होते हैं, केदारनाथ का जो डेटा था वो भी उसमें है, अर्थक्वेक रिलेटेड डेटा है, कहाँ कहाँ बहुत मेजर अर्थक्वेक्स हुए उसके बारे में, फॉरेस्ट फायर का जो है हम लोग प्री वार्निंग भी देते हैं यूजिंग सैटेलाइट डेटा, ड्राउट रिलेटेड डेटा, ओके। So these are the disasters which are covered in this Bhuvan services. This one I'll have. तो डिसेमिनेशन प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको बताया, वेब मैप सर्विसेज जो कि ओजीसी स्टैंडर्ड में है, उसी तरीके
तरीके से जो फास्टर रिट्रीवल के लिए टाइल मैप सर्विसेज, प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए ऑन द वेब करने के लिए वेब प्रोसेसिंग सर्विसेज, इस तरीके की वेब सर्विसेज में डिसेमिनेट हो रहा है डेटा यहाँ पे। एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो हमें सब कुछ ये ओपन सोर्स में करना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी लाइसेंस कॉस्ट इन्वॉल्व हो, यूजर्स को या सिटीजन्स को कुछ भी खरीदना पड़े, हम ये नहीं चाहते। तो इस वजह से हमने जितना भी डेवलपमेंट किया सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज यूज की, जैसे कि मैप सर्वर जो सर्वर है डब्ल्यूएमएस का, जियो सर्वर भी एक सर्वर है, ओपन लेयर्स जो है इसका एपीआई है जिसके थ्रू हम कॉल कर सकते हैं सारी सर्विसेज। Then CZM is for the 3D viewing capabilities. Then Postgres database, which is also free. Sorry. And then various programming languages are there, web technologies. So 192 एप्लीकेशन URLs है जो कि एग्रीकल्चर वेरियस गवर्नेंस एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में हुआ, एटमॉस्फेरिक साइंस में भी यूज है इसका। सिटीजन सेंट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है, विक्रम साराभाई का जो विजन था कि हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा कहाँ यूज होना चाहिए, कोई बता सकता है विक्रम साराभाई का क्या? यस, हाँ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटल नीड्स, करेक्ट। तो हमारा पहला जो थ्रस्ट एरिया है अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा यूज करने का, वो है सिटीजन सेंट्रिक एप्लीकेशंस। So either it is G2C, okay, kind of applications we generally develop more in a mission mode. Okay, very good. I appreciate that you are aware of so many things, and these things are actually very, very important. Okay, so final utilization should be there in the hands of the citizens, na, at the grassroots level. Then only the actual potential you can use of the satellite data. So that's why 28 different citizen-centric applications are there. Disaster-related 16, like that. Education, we also have a school, Bhuvan, you know. So in that website, you have all the maps of, say, standard 9th. If you want to see the maps, they are there. Standard 10th, it is there. So it's very useful. It's made for various applications. If you go now, definitely some 5 to 10 applications will be very, very interesting for you. Definitely you should register today. And yeah, done. Good. Very good. All of you also? Yeah. So you see what are the applications which you are interested in. That will also create like an interest in the subjects. Okay. So new subjects, what you want to do, pursue maybe at a higher level. So next is like environment and forestry, geosciences, health, infrastructure, land resources, rural, strategic tourism, urban and water. तो ऐसे ये सब चीजें करने के लिए हम लोग नेशनल मीट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, चेयर करते हैं। उसमें लास्ट टाइम जो मीट हुई थी उसमें 160 प्रोजेक्ट्स आते हैं एक दिन के अंदर। तो 160 प्रोजेक्ट्स को फिर हैंडल करने के लिए उसको फिर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे वो हमारा सेंटर हो और या कोई भी सेंटर हो, सभी में। किस टाइप के एप्लीकेशंस आए हैं लास्ट टाइम? एसेट मैपिंग के, इन्वेंट्री क्रिएशन के, ईज ऑफ बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं हम इन एप्लीकेशंस को, प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटी। सपोज हमें कोई नया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कुछ डेवलप हो रहा है, जैसे कि जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसमें भी हमारा डेटा यूज किया गया है, हमारी एप्लीकेशंस काम में आई हैं। फिर जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो भुवन पंचायत करके एक पोर्टल है, अलग ही पोर्टल है वो, एक जैसे भुवन है, उसमें पंचायत लेवल प्लानिंग के लिए हमने टूल्स प्रोवाइड किए हैं। फिर मॉनिटरिंग के लिए, जैसे कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जा रहा है तो आप उसके कंस्ट्रक्शन की फोटोज लेके अपलोड कर सकते हैं, फिर उसको आप सैटेलाइट डेटा के ऊपर एज अ पॉइंट में देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं कैसे प्रोग्रेस हुआ, क्या रिपोर्ट किया वहाँ के लोगों ने। इस तरीके से आप प्रोग्राम मॉनिटर भी कर सकते हैं बहुत सारे। फिर इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटीज, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, ये सब कुछ हम सपोर्ट करते हैं। So these are the list of applications like Bhuvan, NUIS, MOEF. These were developed for this, after this particular meet, these are all the applications which were developed to complete their requirements. 75 plus applications are developed, web applications are developed. Some required some only map analysis and all, but some also required software applications specifically, okay, for reaching to the people.
फिर वैसे ही हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था, आपने सुना होगा इसका नाम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें हमने जियो स्पेशियल इन्वेंट्री ऑफ मॉन्यूमेंट्स पूरे इंडिया की बनाई है। तो उसमें अभी तो 100%, अभी 88% से अभी 100% इन्वेंट्री हो गई है उसकी। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तुगलकाबाद के बारे में देख रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है गयासुद्दीन तुगलकाबाद का इस टोम है। फिर हम यदि अपने मुंबई सर्कल की बात करें तो विजयदुर्ग फोर्ट सिंधुदुर्ग में जो है, जो बिल्कुल ही सराउंडेड बाय वाटर है और उसकी वॉल्स हैं साइड में, ये वॉल्स आपको दिख रही होंगी। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक तो मॉन्यूमेंट बाउंड्री रहती है, फिर एक प्रोटेक्शन बाउंड्री रहती है, फिर प्रोहिबिटेड बाउंड्री और रेगुलेटरी बाउंड्री ऐसे रहती है। तो प्रोटेक्टेड बाउंड्री तो मॉन्यूमेंट बाउंड्री रहती है, फिर प्रोहिबिटेड बाउंड्री मतलब वेयर नो कंस्ट्रक्शन कैन हैपन, देन रेगुलेटरी बाउंड्री। तो इन किसी भी बाउंड्री के अंदर में कोई नया कंस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो इसके ऊपर भी एक मोबाइल ऐप बनाया है, फिर उसके बारे में बताऊंगी। जो मोबाइल ऐप बनाया गया था, ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, स्मारक सिटीजन, ये सिटीजन लोगों के लिए, जब भी वो नया कोई लैंड वहां उस एरिया में लेते हैं तो अपना लोकेशन या अपना एरिया वो उसमें डाल सकते हैं GPS के थ्रू। एंड देन वहां से एक सर्विसेज है जो बताता है कि वो मॉन्यूमेंट की बाउंड्री के अंदर तो नहीं आता है कहीं आपका एरिया। ये इंफॉर्मेशन क्लियरनेस मिलने के बाद ही वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिस्टम को हेल्प कर सकते हैं। जियो स्पेशियल डेटा में वो पावरफुल टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों की बहुत तरीके से इजीली हेल्प कर सकते हैं, जो शायद उनको यदि फील्ड में करना पड़े पूरे इंडिया में तो बहुत पैसा खर्च होगा। पहली चीज तो इट्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व, और बहुत मुश्किल होगा हर एक जगह जाके वो सर्वे करना और फिर उसको क्लियर करना। तो इस तरीके की एप्स जो होती हैं, जो GPS GIS जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, वो हर एक काम को इट इज ब्रिंगिंग इट टू योर फिंगर टिप्स, in your hand, in your desktop. So that is the kind of power that you bring through these technologies. Next is like you might have heard about Mandu. Anybody has heard about Mandavgarh? Anybody? You know the history about it? Or have you heard about the stories of Baj Bahadur? Ma'am may be knowing, yeah. Baj Bahadur and Rani Rupmati. Yeah. So all those places we have actually, marked here, and we understood that these are really not stories. These are really truth. Okay, by seeing those monuments. So, so even if you have not gone to certain place, you can study about that. Okay, by seeing the various ASI monuments which are marked here. So this is a picture of that historical story of Baj Bahadur and Rani Rupmati. So there are a lot of monuments in Maharashtra, MP, and all the circles of ASI. So this is a mobile application, that's that I was talking about. So user or citizen, like this is the location where he wants to build his house. Sometimes what happens, ये जो monuments रहते हैं, they are very close proximity to your settlements. They're not very far away now. They're not in outer regions. तब क्या होता है, किसी को भी कुछ construct करना है तो he has to do lot of field work to get the clearance. तो यहाँ पे उस process को ही हमने बहुत fast कर दिया है. By making all the clearance online through your mobile, simple mobile app is there, free of cost. You install, send your location, ask for permission. From there, one service is there, automatically it will run and it will give you whether you are already cleared or no, you cannot build. So that's very quick, right? Yes, ma'am. We have also reported the encroachments in these areas, and also we are stopping it further. It helps in stopping it further because realizing the protected boundary is easy because it is a monument boundary generally. But realizing what is a regulatory boundary or what is a prohibited boundary, it's very difficult on the ground because it's a buffer of that, right? Sometimes it becomes difficult, especially in like hilly terrains or when it is slightly in forest also, or when already some encroachments have happened. So understanding it is slightly different. Here it is very
easy, yeah, to understand which is encroachment and which is not. So lot of things they have discovered also here कि नहीं ये हमारा area था, but अभी वो तो दूसरे लोगों ने capture किया है. So lot of things are going on in this regard. Next is this development and infrastructure project. So here from our center also 2 such projects we have done in Bhuvan. One is this for the Ministry of Law and Justice, Department of Justice, project tracking. So actually they have got the centrally sponsored schemes. मतलब government ने कुछ पैसा दिया है नई judiciary buildings बनाने के लिए ताकि fast track courts आ सकें, जल्दी जल्दी judgment मिल सके, लोगों को justice मिल सके. तो उसके लिए बनाया गया है. तो उसमें वो पूरा मॉनिटर करता है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशंस लेइंग टू द एक्चुअल बिल्डिंग फाइनल 100% व्हेन इट इज कंप्लीटेड. हर स्टेज पे सेम प्रोजेक्ट का आप जियो लोकेशन सेंड करते हैं अलॉन्ग विद फोटोग्राफ्स. देन द सेंट्रल लेवल मिनिस्ट्री दे ओनली डिस्पर्स द अमाउंट, यू नो, they don't go there and see. They have to earlier maybe, but now they don't have to go. On the desktop they can see how it is progressing, how much is built, how much money is spent, how much with that construction is happening. So that is the kind of information that flows in with the, you know, Navik and you know, all these Gagan, all these satellites are there which provide the location based service. Next is the important application we developed here was for MSCTCL, Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited, or Mahatransco. So for them we have generated a web GIS portal. Okay, so what they can do here, they can actually see their substations, their transmission lines. We have mapped entire transmission lines of 46,000 circuit kilometers are mapped. So every line goes through connection by connection of towers. Okay, so all the towers are first mapped. Transmission towers are there, right? So those are mapped, and then over that the lines are connected, starting from the first tower to the last tower, and they connect from the starting substations to the ending substations. That kind of infrastructure projects also we take up. And now it is also developed for the Telangana state after, and we are also going to go for a national framework. Now we have made a national framework out of it. We will be soon presenting it and making it a national project. So like that, when we do some kind of initial studies, it leads to the upscaling of those studies up to various levels, national. Sometimes some studies are also useful for international. But here, that's not the case. But some of the studies are also like disease and all, they are useful for international also. Then disaster management में, so in floods, what we offer to the people, फ्लड इनंडेशन मैप्स, मतलब फ्लड की वजह से कितना एरिया जो है वो जलग्रस्त है, जल उसमें मतलब पानी जो है उसमें भरा हुआ है, वो जो है इमीडिएटली बाद जो उसकी सैटेलाइट इमेज होती है उसमें वो क्लियरली एविडेंट रहता है. और समटाइम्स क्या होता है, लेकिन ऑप्टिकल डेटा से नहीं मिलता हमें वो डेटा. क्यों नहीं मिलता? क्योंकि क्लाउड्स होते हैं एट द सेम टाइम. फ्लड्स जब आते हैं तो क्लाउड्स बहुत ज्यादा होता है. देन वी गो फॉर माइक्रोवेव. माइक्रोवेव में पानी को बहुत आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं. दे आर वेरी गुड एल्गोरिथम्स फॉर वाटर बॉडी डिटेक्शन. तो वो भी बहुत काम में आता है यहाँ पे सैटेलाइट डेटा. नेक्स्ट इज फॉर वेदर and cyclone especially. So intensity and track of the cyclone, the warnings and alerts, okay, then heat wave alerts, damage assessment. All these things are part of the Bhuvan damage disaster management support, DMS. Also we talk about the drought. So agricultural drought, meteorological drought, there are various types of droughts definitions. So all those things through various parameters like NDVI or climate variables, we can define and we present it to the users so that they have a pre-knowledge of what is going to happen now in some time if this remains a. क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता है बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड रेन फेड बारिश पे निर्भर है. तो यदि वहां पे ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं तो हम पहले से बता देने से क्या उनको एक आइडिया मिल जाता है कि अब हमें सिंचाई करनी है, कुछ तो बंदोबस्त करना है, तब हम इससे लड़ सकेंगे. फिर वैसे ही लैंडस्लाइड के बारे में भी इसमें ना सिर्फ डैमेज असेसमेंट बल्कि हैजार्ड जोनेशन भी करके रखा है हमने, क्योंकि हमारे पास सारा डिजिटल एलिवेशन मॉडल है जो कि सैटेलाइट डेटा से बनाया जाता है. मतलब फॉर द एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ स्पेशली फॉर इंडिया वी आर क्रिएटिंग एलिवेशंस एट ईच पिक्सल. So that data
we can convert into various thematic data like slopes, aspects. So using those slopes we can understand जहाँ पे slope थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ की soil उस type की है, वो बहुत सारे एक मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा हजार्ड है लैंडस्लाइड का, कहाँ हो सकता है कि थोड़ी बारिश हो, कहाँ पे लैंडस्लाइड होने की संभावना ज़्यादा है. उस तरह के मैप्स भी इसमें रखते हैं. Next is rainfall induced and okay, landslide forecast. Other than that, forest fire detection, damage assessment also we do, and earthquake में जो damage assessment है that also we do. So one case study of the cyclone Hudhud, here it is shown here. So here you can see a lot of point data was collected, and even the Chief Minister of Andhra Pradesh that time he also appreciated. He also has gone to so many places, and he has appreciated this. These are all the points you are seeing here. These are all the point data collected by various people, means crowdsourcing through citizens have collected this data through the mobile app. At this particular time of Hudhud, we have distributed this mobile app to the citizens. Mobile app to the citizens, and they have collected this data, and all the data has come to the server. So this data you can visualize here. These are the points. Numbers are also shown here. So this way, how you mitigate when a disaster happens, how you are prepared when a disaster happens. This all helps in that. So anyway, this we have discussed. So on the web also, yeah, you have, as I told you, you have a Bhuvan mapper through which you can map your city, your area, your locality, or your district. Okay, so you can go up to whatever level is your limitation, means your limitation or whatever you decide you can develop. So through the web also and through mobile also you can do the same thing. You take this thing GPS from mobile, GPS reading from mobile, and send it to the server, and you create a map. Again, that's a map, no? So that way there are two ways of mapping. One is web and another one is mobile. Then comes data democracy. So what is data democracy? Yeah, tell me. Should have access to the data. Every citizen should have access. So earlier with the remote sensing data policy, which was there earlier, version 1, there were some restrictions for the private and citizen users. But now RSDP 2.0 says that all the data, remote sensing data should be available to all the citizens, all the private companies also, anyone who wants to use for some purpose. Okay. So that there now the data democracy has come, and additionally we also have put a lot of efforts for giving people the benefit of the data. So that's why we have created a data download portal, that is NOIDA, NRSC Earth Observation data download facility. Yeah. Misuse of data, yeah, some people can do it. See, now data is available even in Google Earth, na, for the entire world. They have not asked any permissions also. They are giving it because they have the data. So anyway, whatever restricted zones are there, still they are masked and clipped. So you don't have any problem there. But whatever data like general data is there, which doesn't require that much security and all, that has to be used properly. So there is always a conflict between the two things, but we clip and mask those data and then we generate a mosaic. So that way we take care of both the things. Because our work also should not stop, and scientific academic research also should not stop. So in order to support, we have to give the data for various purposes. So here we are giving the data for like list 3, hyperspectral data is also available. CartoDem, digital elevation models are given to you. So you can derive even more layers. These are just the satellite base maps. These are the backgrounds for you. Over that, lot of thematic data you can create yourself. You can create your own maps, you can create your own layers, you can create your own thematic data sets. Then also we have developed this CartoDem version 3, which is very high resolution DEM.
So if we talk about this data archive, the data downloads for list 3 is above 3 lakhs. Cartodem is 1,59,000, AWIPS is 37,000, NICES is 35,000. Total downloads are 5,59,000 downloads. Okay, and it is increasing day by day. So Noida, we also have a facility called NICES, which is National Information System for Climate and Environment Studies. So हम climate and environment के ऊपर एक अलग से एक portal है again. So in this 13 years that we have covered, lot of things people have done, various department, means हमारे अंदर भी बहुत सारे छोटे-छोटे departments हैं actually, जो कुछ हैं climate पे काम करते हैं, कुछ agriculture पे काम करते हैं, तो हर एक जो है एक applications लेके आ गया अभी तो this is having lot of data like tropospheric ozone कितना है, तो उसका daily हमें data मिलता है 2010 and above. Then ocean heat content कितना है, tropical cyclone heat potential कितना है, then 26 degree isotherms कैसे हैं यहाँ के, tropical cyclone heat potential, wind curl, wind stress, wind velocity, and so many, so on so forth. मतलब there is endless list of these scientific products which are available, which can be used for the climatic studies and environmental studies. Then also we have the road network and navigation. तो यदि आप Bhuvan light पे जाओगे, तो you have routing. Okay, you are getting bored. Actually, the main interest will come only when you use this. Even if I tell you about 1 crore applications also, maybe tomorrow after some years, you will only get interested when you use them as a tools. Then only you will understand कि भाई मैं इसको तो बहुत use ही नहीं कर रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था. Sometimes I feel like that when I see some of the thematic maps. अरे मैंने भी see, I'm not specialized in everything, you know. And there's so much information available as maps. And when you see one picture of map, it gives you so much information in one go, which if you read, it is very difficult to grasp. So it's like a field survey you are seeing on the screen. Okay. So like navigation is also available. This already maps में, Google Maps में भी है, but यहाँ पे भी है. Then neighborhood में like location based services में nearest school, nearest hospitals, nearest point of interest क्या है वो सब भी आप पता कर सकते हैं. So there are a lot of applications, as I told you, citizen centric, like visualizations, downloads, mapper, asset mapping, like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. So that is Manrega. So Manrega also assets we have mapped. Then Bhuvan Panchayat mein also assets we have mapped using mobile applications. Then planning and development mein Manrega planner is there, Jai is there. So many are there. I have just listed few. Then monitoring mein AIBP is there. Andhra Pradesh Housing Control Housing Corporation is there. Integrated Watershed Management Program is there. Decision making, reporting, resource management, and COVID-19 support also we have done. So these are some of the applications. Just you can see the list is there. Then we also have developed one very good initial study on Karnataka forest actually. So this also won an award from their side actually. So Bhuvan got an award also for this because this was the first time for forestry such kind of application was developed. Where we also give them forest fire locations automatically derived from satellite data, forest fire regimes, and change monitoring. Tourism GIS, now whatever high scale data is, large scale data sets are available, as I told you, na? Very high resolution where we have data at cadastral level data is available. So for tourism also you can use it. Suppose you want to visit, you're in Punjab, you want to visit the Golden Temple. So you can just find out where is the Golden Temple, take a route there. Or if you're at Golden Temple, you want to go to some restaurant, you can just search nearby restaurant and just start navigating. So those kind of additional services also are provided. Then pest disease surveillance, as I told you, wherever diseases are there, people can upload. And plantations में like tea plantations, rubber plantation, horticulture we are talking about. Tea plantations, rubber plantations, all these things, and even coffee plantations. We have mapped everything here and we have hosted in these projects like TGIS and Coffee GIS, etc.
Then Chaman is coordinated program on horticultural assessment. यहाँ पे हमने orange plantations का mango plantations के ऊपर बहुत सारा data means the crop maps of these plantations, horticultural plantations are developed and posted. So this is Manrega application. Almost 2-3 lakhs now. I think 2-3 crores of data points are uploaded. Manrega assets are uploaded from all across the India. It's a crowdsourcing project. So from every panchayat, every village level people, they upload their data that how a particular asset they have created and how it is helping in their employment. From every village they are uploading this. They have uploaded already. Lot of data is there. Similarly, watershed management program IWMP, we have supported them for monitoring their watersheds for understanding and planning and also for decision making. Similarly, accelerated irrigation benefit program, AIBP is one such project where we have given them the changes which are happening, the canal networks which are built, canal boundaries which has come up over the period of year, they can see and they can do the monitoring part. Then urban information system, for this we have generated the urban land use and all the urban base layers at that level. You know, every map has a scale, so at that scale generating means you have lot of diversity that you have to map. So those kind of 139 towns are covered in NUIS. Then urban growth, this was what is urban sprawl actually. If you see here, the yellow color, whatever you are seeing, this is in 1991. Okay, in 1991, how Indore looked. And this pink color extent, whatever you are seeing, this is how in 2014, the settlements or the population spread is there here. So this is the urban growth. We do it through satellite imageries, of course, through the time series data that is available. And it is all hosted on Bhuvan. Then for Post, Department of Post also we have developed an application. Now you can search any post office in India through the this post office pin code or through the type of post offices like head office. And once you, or the name of the head, the post office, and also once you select a particular point, you can see what are the facilities available online. You don't have to go and find. Online you can view and then you can. Similarly, Bhujal using the groundwater potential maps, environment information networks, Ganga portal, so you all know already. This is the one important application, School Bhuvan. Here all the physiological and other different types of maps, agriculture, water, soil, mineral maps, based on the NCERT syllabus, they are hosted on Bhuvan. This is called School Bhuvan. Okay, you just search for this in the Google, you will get, or you can also search in the Google. Then for Election Commission AP also, we have developed an application. State portals are also there for all the 30 states, showcasing various layers which are generated within the states. So northeastern states also we have this portal, so that's very useful for them because वहाँ पे जो है उतना ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजिकल, हालांकि वो लोग भी बहुत डेवलप्ड हैं, कुछ क्षेत्रों में वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बट उनकी मदद करना लाइक वन ऑफ द प्रायोरिटी ना, सो वहाँ के लिए भी सारे स्टेट पोर्टल्स दे आर यूजिंग इट. Then also we have supported the COVID-19 in India using various applications, like one is geo visualizations, another is a dashboard like day-wise COVID-19 spread in India or in a state or in a district, pan-India, what is its scenario. Then for Telangana Health Department, we have given citizen reporting mobile app and also officer reporting mobile app. Then home quarantine tracker, who are the people who are in home quarantine now. You can see their locations using the mobile app. They can just see, and at what time also you can filter through the time. Using time, you can see in this particular duration who are the people who are under home quarantine. Then for Bihar Health Emergency Operation, we have given an application highlighting the locations, the containment zones, the territorial tertiary boundary zones for urban and rural areas, and the village boundaries or other things, locations which are underlying those zones.
सो कौन से जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, कौन सा जो है उसके बफर में है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम जीआईएस के थ्रू हमने प्रोवाइड करा है बिहार में. देन मोबाइल ऋतु बाजार, सो it provides real-time coordinates of the Ritu Bazaar and enables them to allocate vegetable transport vehicle. तो उनको ट्रैक कर सकते हैं वो, और अपना रूट जो है प्लान कर सकते हैं कि वो कहाँ पे जाके उसको बेच सकते हैं. Then for meal center similarly. Then we have also given this for patient information display. There is a application you might have heard Monal karke. So there also the Bhuvan was used for the map services. Then CDAC is using 112 plus APIs of Bhuvan in various applications which they are using. Also for locating the vaccination centers, it's useful, giving them also the routing information and navigation information, how to reach there, what is the location, what is the name, what is the pin code, everything. Then also regarding the COVID beds, we have given for the Tamil Nadu. So where are the beds, how many are available, live tracking. So there are various APIs also that we provide to our users, like proximity, so location-based services, which are the nearest hospitals and post offices, etc. We also give village geocoding and reverse geocoding. So you can geocoding. What do you mean by that? You have a lat long, you can find out what is the address of that lat long. Or if you have an address, you can find out what is the lat long. So that is reverse geocoding. Location to village and village name to lat long. That kind of APIs are there. Thematic Statistics Api. So whatever thematic data is there, you draw any area and you find out what is the percentage of land use, each type of land use there. So that's the Thematic Statistics Routing API, and all the APIs they give in standard output JSON format. So you can utilize them easily. So there are 100 plus unique organizations which are using Bhuvan, 800 GB of data flow per month, 60 million hits per month, 70,000 unique IPs per month, 50 countries are the users, 62,000 map services plus map services, 5.5 lakhs free data downloads, 10 million, 100 million points of interest information. Then if you see the web analytics, so data downloads sometimes are at peak, and some locations, why it happens? Because of some events, some news, some disaster which has happened. So because of that, people want to, download more data, analyze it for their purpose. So during Chennai flood event, you can see there is a high use of Bhuvan in that area in the flood time. Because people can't go out, but they want to know what is happening outside. So they use this information portal Bhuvan for understanding the scenario. So worldwide, these are the Bhuvan users, and in India, these are the distribution of users at particular point of time. Okay. So ISRO has got, Bhuvan has got a lot of awards like Scotch Order of Merit Award, Abhinav Innovation Award, Special Achievement in GIS to Bhuvan, S3 Redlands has given this award. I told you Karnataka Forest Department has also given an award. Geospatial Leader Award, Popular Geo Portal of India, Geospatial Forum has given this award. ASI Team Excellence Award 2009-10 and ISRO Team Excellence Award 2009 and 2014. So the architecture of servers that we are having at various locations is like this. In Hyderabad, there are 3 locations: Balanagar, Shadnagar, and there's also content generation facility. There, all our servers are there. Okay, main servers, and then we have mirror servers at Jodhpur, Bangalore, Kolkata, Nagpur, IRS, Dehradun, NESAC, Shillong. DOS Secretariat, now it is now RRSC North Delhi, SAC Ahmedabad, and also 4 nodes are there in central ministries. Some nodes are there in northern states, eastern states, central states. So there are various people which are actually handling the loads for various areas. So that for load balancing, if it is there, so more and more people, if they use, it will not crash. So that way we have to, bring in more infrastructure, more servers. So that's how it is distributed. So thank you so much for patient listening. Nice, talk.
First, we'll be taking the questions from the students who are sitting in the class, and then some questions are there on the YouTube channel. So I will ask the question on the behalf of the students. Okay. So if anybody is having, Think that. Can you introduce yourself, please? Okay. Ananya Vyas, please give her a mic. Okay. Like you mentioned before, for the beds, that data, that information is provided by the state. Yeah. By the people also sometimes. Patients that don't have. I'm sure, but somehow It's very accurate. It's very accurate. Why I'm telling you is nobody is creating those maps. Once the map is generated through mobile GPS, it's very accurate. Because GPS, it's not, it can be it can't be manipulated. So it gives the accurate GPS location data that is generated through the GPS satellites. So it's more accurate sometimes than the manual, adding of points here. it's like that data section. Yeah. sorry to interrupt, but can we have question in Hindi? Because the students who are hearing online, हिंदी में आप पूछ लीजिए जी Hindi or Marathi, anything will be. Okay. हमने मतलब कि data connections और processing, अगर जैसे हम documentary का देखें या floods का देखें, disasters का देखें, हर दिन नया data जी हर दिन बहुत नया data. जी So, जो information citizens को मिलती है, वो इस process यूजफुल है कि नहीं आप पूछना चाहते हो यूजफुल रहता है आई विल टेल यू सैटेलाइट डेटा जो होता है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है अदर देन सम नेचुरल डिजास्टर्स व्हेन दे आर हैपनिंग सॉरी हिंदी में बोलती हूँ जब भी कभी ऐसा कोई डिजास्टर हो रहा है जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा है या फ्लड आ रहा है तब वही अर्थ जो सरफेस में कुछ चेंजेस दिखते हैं अदरवाइज अर्थ सरफेस वैसी ही रहती है 2 साल तक बहुत चेंजेस नहीं आते थोड़ी बहुत चेंजेस क्रॉप लैंड है वो थोड़ा सा डायनेमिक है उसमें तो फसल आती है कटती है सब होता है बट वैसे जो जनरल जो वो तो बहुत ही नोबल सा है एक सरफेस हमारा बट बाकी जो भी हमारा सरफेस रहता है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है तो इट इज यूजफुल तो गूगल में भी मैप में भी आप जो देखते हैं इट इज नॉट लाइव डेटा मेनी पीपल थिंक दैट जो भी हम डेटा देखते हैं सैटेलाइट का वो लाइव है बट वो लाइव नहीं है सर सिर्फ सैटेलाइट लॉन्चिंग हम लाइव देखते हैं उसके बाद जितना भी डेटा आता है वो तो करेक्ट करके और उसको प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा सा जोर से थोड़ा सा माइक हटा के मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि ये मनरेगा में काम करते हैं जी सो इन क्लास 9 service we have it. मनरेगा या So my question is how exactly does this satellite information Good. So actually, Manrega में you know that there is some amount of money which is given to the people in order to employ them. Okay, so they are like small entrepreneurs. अच्छा तो वो चाहते हैं एक सिलाई मशीन खरीदना चाहते हैं या वो चाहते हैं एक छोटा सा उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए कंप्यूटर मिल जाए और व्हाटएवर एक वेल मिल जाए और एक कैटल मिल जाए okay so their requirement is very small at the same time for those local people it is very required क्योंकि वो उनको उनके जीवन यापन के लिए वो जरूरी है उनके लिए वो उस पर निर्भर करते हैं they are dependent on that so वो जो है हर चीज हम जो है जो पैसा दे रहे हैं अब पैसा दे दिया पर उसने नहीं किया वो भी नहीं चलेगा सो दिस इज प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम दैट हैज कम अप विद दिस तो यदि उन्होंने पैसा दिया है तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर देम कि वो अपना फोटो और जीपीएस लोकेशन अपलोड करें
Okay. So we can see this is the photo and this is the location. वो बाहर जाके या कुछ ऐसे गड़बड़ नहीं कर सकता है. Okay, so it is basically For also helping the management. दोनों को ट्रांसपेरेंसी लाने. ऐसा होने के बाद वो गलत इस्तेमाल नहीं करें जैसे कि वो चेक हाँ मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट हो ही उससे, क्योंकि उसका गोल वही है. यदि वो कहीं और लग रहा है या यूज नहीं कर पाया तो वो उसका गोल नहीं है. वी हैव नॉट रिजॉल्व ना दैट प्रॉब्लम. तो वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हम ये भी निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि वो प्रॉपरली यूज हुआ कि नहीं, उसको कुछ कमी हुई तो दैट ऑल्सो वो बता सकता है उसको. Applications. Chemical acquisition of soil and remote sensing how to build the salinity of soil and boosting all the chemical properties of soil for the farming. हाँ, so chemical properties नहीं, some of the data is collected in the field and then उसको हम understand करते हैं कि field से हमने जो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ही soil की सारी chemical properties नहीं दी हुई है. यहाँ पे उसकी soil chemistry नहीं बता रहे हैं. हम simply ये बता रहे हैं कि ये area जो है वो salt affected है. तो first is association, आसपास क्या है, then field knowledge, then उसका signature, satellite में किस तरीके से वो data दिखता है. जब वो सॉल्ट अफेक्टेड होता है तो उसमें डेफिनेटली सॉइल में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उसमें रिफ्लेक्शन में भी चेंजेस आते हैं. तो वो पिक किया जाता है. वो सिग्नेचर्स को पहले फील्ड सर्वे से समझा जाता है कि ये यदि होगा तो वो सैटेलाइट इमेज में कैसे दिखेगा. तो वो करने के बाद फिर वो मैप्स जनरेट होते हैं और फिर फील्ड वैलिडेशन अगेन होता है उसके बाद जहाँ पे भी कंफ्यूजन्स रहती हैं. Question from Vivian. There is a question from Mishka from Narayana Vidyalaya. She is a student of 7th class. Question is, can the type of crops be identified by this images? टाइप ऑफ क्रॉप्स. Yeah. या देयर आर लॉट ऑफ एक्चुअली बहुत सारे इसमें हमारे रिसर्च चल रहे हैं. कुछ तो हमने किए भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर प्लांटेशंस जो रहते हैं कुछ कुछ जैसे ऑरेंज वगैरह के, उनकी बहुत स्पेसिफिक ट्रीज और सिग्नेचर्स रहते हैं. उनके हाइट और उनकी कैनोपी साइज बहुत ही अलग रहती है. तो दे आर क्लासिफाइड डेफिनेटली बट नॉट लाइक थ्रू आउट द इंडिया. लिटिल बिट ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड देयर फॉर इंटरप्रिटेशन. And there are a lot of machine learning and deep learning studies going on in this. Can you stop sharing this thing because then on the YouTube the Okay. full video will be going. And the next question is from Parth. This question is just 2 minutes. Just क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके कर दीजिए. this question is, can the area under cultivation be measured, particularly in the hilly region? The hill region, can the area? Area, yes, through ortho corrected data only it can be done. Ortho corrected क्या है, वो 3D में corrected रहता है डेटा से. तो उसमें हमारा जो है एरिया वगैरह सही आता है. यदि हम 2D वाला डेटा देंगे तो उसमें एरियाज गलत आएगा बिकॉज देयर इज आल्सो एस्पेक्ट जो 3 डायमेंशनल लेंस है वो नहीं उसमें करेक्टेड है. तो वो एरिया जो है ऑर्थो रेक्टिफाइड डेटा से हम फाइंड कर सकते हैं. Okay, and one very funny question from a student of 5th standard. Name is Sar, and this question is, ma'am, now the schools are opening and can we have, and now we have to go to school, and my parent monitor my movement whether I'm in or out of the school. This is an interesting application, I think. Other than school, Bhuvan, I think student monitoring application should be made. What do you feel? This is possible. This is all possible, but अभी तक ऐसा कोई requirement नहीं है पेरेंट्स से, तो हमने ऐसा नहीं बनाया है. And now one question from my side. Nowadays, Google has come up with a sort of code for my particular home, my address. Earlier it was pin code, but that is for the area. Now the Google has come up with some alphanumerical type of code, and my house code is 4427 plus PR. If I'm sending somebody this, he will put it on the Google map. And That is geocode. That is yeah. geocode. Yes. So is this facility available at the? Geocode is available as a at village level. It is available as of now. Every address in India it is not geocoded because you know India's diversity. It has it is slightly unplanned, not like US and all.
But yeah, for every feature that is there, definitely we have a code, but this kind of facilities as of now not there. Now, one small request from my side. I have just updated that ISRO Bhuvan App and I was searching VNIT. We have on that app, VNIT Garden, you are showing VNIT Garden guest house is there, but VNIT name is not there. So I request you to please include that. Please register in Bhuvan and send this feedback to Bhuvan that we include this name. So you should all be part of, in US and all, and wherever countries you are using these applications. Now, all the people, not only in their country, they have given money. Anyway, they have a lot of money, so they have given money, but people have crowdsourced the data. Even freely also, people have crowdsourced the data to update that. So it is not made by a single team. Actually, it is the effort of the entire world. So that way we have to update Bhuvan also. Then only we can see our own Bhuvan. Now it's just Bhuvan maybe. Then once you register and you become a part, you start sending data. Then it becomes your own Bhuvan. Yes, similar to that of Google Guide. Yeah. Is there? Yeah. Yes, sure. Instituted by a one extent. Yes. That is the ratio. Project development. Yes. What is that ratio for the government? Same, ma'am. Same. Same or lesser than that also, because Google Map, they are actually they have lot of these things, budgets and all, and they have lot of money also. So, and it's a commercial application. So they buy data from all the countries. All the countries almost internationally, from many countries, they buy the entire world data. So sometimes if it is not Indian, it is outside, sometimes it is higher resolution than our data also, means 0.25 meter also they are having. And also earlier they had some aerial data also, because they have also done aerial surveys. So second question is, I want to ask, in what ISRO is doing to have the market and to make this app more popular than Meta? See, they started earlier first. Yeah, a lot of initiatives are there. That there are a lot of outreach programs organized by Bhuvan. So every year, and also there are some orientation programs for making various users become part of Bhuvan. That's why these many applications have come up. Otherwise, it would not have been possible. So Bhuvan people are not only meeting the ministries and the state departments, they're also trying to reach to the people also through many workshops, through many demonstrations, outreach programs. Like this is also one of the outreach programs. Like that, we conduct several these kind of programs to bring it to the more nearer to the people. This Bhuvan App is simple, I think so. Yeah, it's very simple. Only 3-4 entries and you are through. Yes. Yeah, one more question. One more question. You mentioned earlier that content as well. So how does that look like any random data if you get the registration number Yes. and how does it look like? Most cars, at least in India, are not encrypted. या इट डजंट तो इसमें कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है कोई ये फोन मोबाइल फोन से चलता है तो फर्स्ट इन द दिस car or whatever vehicle you want to use, you have to just register the registration number of the car. Along with that is done through your mobile only. तो मोबाइल से ही सारा डेटा जाता है and then this mobile becomes a part of the device of the vehicle. सो मोबाइल मतलब लेके आप बैठेंगे और आप जहाँ जाएंगे तो डिवाइस के साथ साथ आपका लोकेशन जो व्हीकल का लोकेशन है वो भी ट्रैक या Thank you, ma'am, for the nice explaining about all this. Thank you, sir, so much for giving me this word. Yeah, on behalf of DNIT and Viva, again, thank you. And thanks, ma'am, for the department for being here for the lecture. And dear students, very much thankful to you also for passionate listening.